introduce another character. अच्छा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने ये बात की ना कि बाली जो है उसने सुग्रीव को बाहर निकाल दिया है अपने देश से, अब सुग्रीव जो है वो कहाँ पर रह रहा है, बिकॉज ही कैन नॉट फेस बाली. सो ऋषिमुख पर्वत एक जगह थी, वहां पर जाके वो रहने लग गए, बिकॉज दैट वॉज द safest place because Bali was cursed not to enter that area. So that is another story. Story mein story hai. I'm not going there right now. So this is the Parvat where Ramji met Sugriv and Hanuman Ji for the first time, and they clarified, they actually made the strategy to kill Bali, reinstate Sugriv there in Kishkinda, and in the barter, what Sugriv will do? Sugriv will help Ramji to find Sita. The purpose is to find Sita, right? So Ramji said, okay, I'll do something for you, but in return, you help me out to find Sita. So this was the barter. Everything was fixed. Now, when the fight between Sugriv and Bali was happening, so okay, this is another very beautiful aspect which I want to share here. There was, so Ramji told Sugriv, you go and tell Bali that I am ready for the fight. Because Ramji didn't want to just directly go and kill Bali. So now Sugriv says, come, we'll have fight. And the first day fight, Sugriv actually lost the fight because Ramji couldn't recognize when the two things were happening. So there is another story behind it. So when second day he goes, Ramji says, you fight. I will kill Bali, but you fight. अब सब मोस्टली पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन, यदि राम जी ने ही मारना था तो सुग्रीव को क्यों भेजा उन्होंने बाली को लड़ने के लिए? दिस इज सच अ ब्यूटिफुल वे टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू एक्चुअली परफॉर्म, टेक एक्शन. स्ट्रगल आपको खुद करनी पड़ेगी. जो रिजल्ट्स हैं वो भगवान देते हैं बाद में. दोज आर नॉट इन योर हैंड्स, एंड ही विल हेल्प यू if you are doing purusharth, if you are doing your own karma, if you are going through your own struggles. You will be rewarded. You will be taken care of. You will be helped. You will get the right consequence, the right fruit of your action, which is in Lord's hand. हम हमेशा कहते हैं वो तो भगवान के हाथ में है. क्यों भगवान के हाथ में है? ये समझ के चलिए कि जब आप उस रास्ते पर चलते हैं जो उन्होंने बताया है, which is a right way of movement, then he is always supporting you. But you have to take action. कॉम्प्लेसेंस नहीं चलती है ना रिलीजन में ना स्पिरिचुअलिटी में. ये बहुत बार लोग सोचते हैं कि भगवान के हाथ में तो हमें कुछ करने की क्या जरूरत है. तो भगवान के हाथ में है, कर्म आपके हाथ में है. उसी की मदद होती है जो काम करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्राइव करता है. ओके, सो नेहा, आई विल कम टू यू विद दिस. यू वांट टू एक्सप्लेन इट राइट अवे और आई शुड मूव अहेड? Sure, whichever way. Actually, ये जो आपने point बोला doctor, that you have to do it. So a lot of times, as an astrologer, I'm also asked that if I do this remedy, how much or in how much time will I get the benefit? And I think this is the story which I should be telling them now, that do your deed. You cannot compromise on that, and there is no measure of how much you should do. It is in comparison to, or it is comparable to how much karma is there that we have got before it gets balances out. And also remember one thing, that the universe, or let's say Surya as Ramji or God in this case, is always seeing. They know the right time when they have to intervene. So when we say that we have faith, I also ask people, ask yourself, do you really have faith? Because faith would mean that I am doing my deed and I will get out of my way to the extent that now I let the universe take over. Astrologically, what I see the connection of this is that there are a lot of people who have a negative karmic registry with moon, which means that they're so impressionable, they're so impatient that, you know how the moon is as in the sky, that it keeps changing faces. It is never the same. So even if they understand the concept to some extent, today, tomorrow, that restlessness will again set in, that I've been doing remedies, but I'm getting no result. But Neha said I should get results. So when am I getting it? So which is where these kind of stories, they come into picture and they help us stabilize our moon, that I know what I'm doing is right and it has been guided well, and rest I leave to the universe. And as Ramji intervened at just the right time, in my life also, Ramji or universe or God, whoever you believe in, will intervene and is already intervening because they know better, they know the bigger picture. Mujhe nahi pata, I don't know the bigger picture. Yes, so, and this is a very beautiful answer to those questions. When people ask spirituality mein, we become very complacent in spirituality sometimes because we have like, we think kismat mein jo hona hai wo mil hi jana hai, karenge ya nahi karenge. That never happens. You have to put your actions forth.
you have to work, you have to do that पुरुषार्थ जो हमारे ancestors ने बोला है, पुरुषार्थ आपके हाथ में है, कर्म करना आपके हाथ में है, बैठे बैठाए कुछ होने वाला नहीं है। इसमें डॉक्टर सॉरी, इसमें मैं एक और चीज बिफोर आई फॉरगेट आई वांट टू ऐड कि मार्स की जब भी हम हनुमान जी का कहते हैं, पहले भी हमने बात की थी, वी स्पीक अ लॉट अबाउट मार्स। मार्स इज आवर एक्शन टेकिंग एबिलिटी, राइट, टू नो व्हेन टू डू व्हाट, to know when to surrender. Mars is not just about action, action, action. That's not what life is also. And where you beautifully said that to also know that when do I need to act and how much do I need to act. If we start conserving that energy, stabilizing our moon with such stories, beautiful stories that you tell us, and gain that confidence, which means that just by default of listening to this, our sun becomes stronger. Sun is our confidence. By connecting to our roots, which is the Bali and Sugriv example that you gave, that to recognize the bloodline which we come from, which also gives us some sort of strength ki, I belong to that bloodline and this is what my ancestors were known for, and it just naturally flows through me. We will be able to make better decisions in life. Our behavior will change. We ourselves internally will change. So which is what I often say, that astrology is not just a game of predictions. Astrology is a game of looking at what course correction we need to do in our life and what are those changes which we need to bring in our behavior such that I can have my destiny in my hand and sun is always with me. So, sorry, I just wanted to add that. No, that's amazing, Neha. That's very beautiful, because we are born with some kind of purpose, with some kind of root which has been given to us, imparted to us, some tasks which have been imparted to us. We have to do that and we have to be aware, mindful of them. We have to take action. But how much action, where that energy should go is also in our hands. So this is a very beautiful way of telling. And as you mentioned, astrology is not only to do predictions or to do certain things. It is also guiding you where your soul purpose lies, where your tendencies are. All the planets, they are actually telling and guiding us that this is the way you should be utilizing your energies, your talents. These are your talents, and you should be finding your life purpose through that. That's amazing. Thank you so much for sharing this. So now we'll move a little forward with the Bali and Sugriv only. So then this fight is happening here. Hanuman Ji is not visible because now it is between Bali and Sugriv. And now Ramji, in the end, kills Bali. Now, lots of questions will keep coming. So what I want to project and highlight here, when Bali dies, Bali asks Ramji, why did you kill me? What was my mistake? Why did you come in between two brothers? It was between me and Sugriv. Why did you interfere? What is the reason why you killed me? And Ramji answers all the questions before he actually, gives him शरणागति, because जब भक्त जाता है, जब राम जी के हाथ से कोई जा रहा है ना, तो उसकी तो शरणागति है ना, उसको तो वैकुंठ धाम मिला है डायरेक्ट. So now he answers all these questions before taking him into himself, right? Acha, when he finds the answers and he finds that he's my, like Ramji is my soul, Ramji is the Lord. जब वो recognize कर लेता है, he says, I seek forgiveness, but do me a favor. मेरे बेटे अंगद का हाथ अपने हाथ में ले लो. वो राम जी को रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे बेटे का हाथ अपने हाथ में रखो. Now when the moment that realization happens to Bali, that Bali is wrong and Ramji is right and Sugriv is chosen by Shri Ram himself, he immediately accepts his mistake. And he tells कि मेरी next generation का ध्यान आपने रखना है. Take care of Angad now. He surrenders to Shri Ram and gives his son to Shri Ram himself. This is such a beautiful moment when I interpret this. Sometimes हमें पता चलता है कि हमारी गलती है, क्योंकि see, we are all human beings. We have certain ideas, certain belief systems, certain value systems in us. हम उनको लेकर चलते चले जाते हैं. जब हमें वो रोशनी मिल भी गई, जब हमें किसी ने वो ज्ञान दे दिया कि आज तक आप जो सोच रहे थे वो गलत था, अब आप सही हो सकते हैं, लेकिन हम अपने अहंकार वश में, ईगो के वश में आकर कभी भी उसको स्वीकार नहीं करते. बाली से सीखने की क्या बात है, उसका एंगर, उसकी एरोगेंस, उसकी ईगो इतनी हाई थी. बट मोमेंट ही कम्स इन फ्रंट ऑफ द लाइट, व्हेन आई से लाइट, जैसे आप राम को सूर्य कह रहे हैं, सोल कह रहे हैं, ज्ञान जैसे ही प्राप्त हुआ, उसने तुरंत स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया, सरेंडर किया और अपने बेटे को उनके हवाले किया. और हम जानते हैं कि जो अंगद ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है आगे की रामायण में. हम जानते हैं कि अंगद को सेनापति बनाया सुग्रीव ने अपने राज्य का.
और उसकी लीडरशिप में ही अलॉन्ग विद हनुमान जी सेनापति जो थे वो अंगद थे, उनकी लीडरशिप में ही आगे जो ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो रामायण का टू फाइंड सीता इज accomplished. So this is a very beautiful incident which I always feel very passionate about, that in our generation we have to also realize कि अपने जीते जी ये जो फेथ है ना भगवान में अपने बच्चों को देने, उनमें ये सिखाएं, उनमें ये सीड, ये जो सीड है वो डाल दें, that there is some kind of higher intelligence, some kind of wisdom, some kind of intelligence which our ancestors had, and it is there, it will anchor them. उनको एक आधार मिलेगा, उनको एक फाउंडेशन मिलेगी, उनको एक चलने की दिशा मिलेगी. बिकॉज स्क्रिप्चर जब भी हम भटकते हैं, हमने देखा है हमें स्क्रिप्चर सहारा देते हैं, वो हमें मार्गदर्शन करते हैं, डायरेक्शन देते हैं. चाहे वो गीता को ले लो, चाहे रामायण ले लो, चाहे और बहुत सारे योग विशिष्ट हैं, बहुत सारी किताबें हैं जहाँ जिस लेवल पर भी हम स्टक हो जाते हैं हमें गाइडेंस मिलती है. तो ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, ये जो शक्ति है, ये हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को दें. व्हाट डू यू से नेहा? डॉक्टर अनीता, आई मीन नो सेकंड थॉट्स अबाउट इट. एंड आपने जब ये कहा, मेरे को एक थॉट आया कि कैसा होता है ना कि चाहे हम कोई इमोशनल हीलिंग का काम कर रहे हो या फिर जैसे एस्ट्रोलॉजी का भी जब काम करते हैं, तो हम यही कहते हैं कि अगर हम अपने कर्मा सवार लेंगे तो हम सिर्फ अपने आप पे नहीं काम कर रहे. वी आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन आवरसेल्व्स, वी आर एक्चुअली पेविंग द पाथ फॉर आवर जनरेशंस टू कम and generations which have gone by, and this is exactly how we do it, right? कि बाली ने अंगद का हाथ सूर्य राम जी के उसमें दे दिया, और फिर उसके बाद अंगद उनकी छत्र छाया में रहे. तो जैसे ही हमें समझ आता है और जैसे ही हम अपने आप पे काम शुरू कर देते हैं, या एस्ट्रोलॉजी में जब डीएनए एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो हम अपना कोर्स करेक्शन, कर्मा करेक्शन शुरू कर देते हैं. हम सिर्फ, वी आर नॉट वर्किंग ओनली ऑन आवर हीलिंग, वी आर वर्किंग ऑन द हीलिंग ऑफ whatever creativity and whatever generations are supposed to come from us. So it is a healing blessing which we give through us to our blood, you know, to our entire bloodline. And it's just amazing. Sometimes I get mind blown by how our ancestors came up with these observations of what was happening in reality and then putting it in words in such a manner कि not just कि I mean ये राम जी है, हनुमान जी, पता नहीं कितने साल पहले वो रहे होंगे, but how all of these stories are relevant to us even today. You know, modernization हो गया, technology आ गई, आज हम we are speaking to each other through the medium of internet on Zoom, जो कि हम at one point सोच भी नहीं सकते थे. But these stories are still relevant, and which is what I discussed in the beginning, कि the story is a way, and जो आप सारे लोग आज सुन रहे हो, you know, don't stop it just listening it. एक कहते हैं शास्त्र में ये लिखा है कि विजडम को कभी भी अपने आप पे मरने मत दो, which means that don't just think कि मुझे पता है and that's about it. Pass it on, you know, make it available to everyone else so that it keeps breathing. सरस्वती को आप हमेशा energized रखो, such that आपके थ्रू वो और आगे जाए, वो उनको और लाइफ मिले, क्योंकि सरस्वती अगर मर जाती है हमारे साथ, which means that we do not pass on. वो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं जुपिटर जिनका कैप्रिकॉर्न में होता है, जुपिटर इज विजडम एंड कैप्रिकॉर्न इज अ सैटर्नियन इफेक्ट. तो उनको कर्स होता है जुपिटर का, विजडम का, कि उनको पता तो होता है बट उनको कोई सुनता नहीं है, या उनके पास वो खुशियां नहीं आती, बिकॉज जुपिटर इज ऑल्सो अ कारक ऑफ होप. तो इसीलिए इस विजडम को पास ऑन करो, क्वेश्चंस पूछो सो दैट और चीजें इसमें से निकले. क्यूरियोसिटी अपनी बनाए रखो, विच इज मर्करी, सच दैट बुद्धि काम करती रहे, और फियर को लेट गो करो, स्टेबिलिटी को अब्सॉर्ब करो, विच इज अ बेटर यूज ऑफ पैटर्न, एनर्जी को वाइजली यूटिलाइज करो, विच इज मास. एंड सूर्य जो है वो आपके ऊपर हमेशा कृपा रखेंगे, ये नो इन द बैकग्राउंड, वो तो है, वेदर यू कैन सी इट और वेदर यू कैन नॉट सी इट. सो या आई जस्ट गेट थ्रिल्ड. आप जब भी स्टोरी सुनाते हो मेरे तो गूज़बम्प्स आ जाते हैं. आई रियली एंजॉय देम. थैंक यू सो मच. आई थिंक हमारे पास अभी इतना ही टाइम है. And if you have enjoyed these stories, and if you think that this kind of session can be repeated, we will come back with certain other stories and आप WhatsApp chat पे डालती